our right to education field visit. The RTE Act 2009 is a very powerful tool since it spreads the importance of education and it also provides certain mandates which need to be fulfilled by various schools in order to provide quality education. As we know, books are the means which create bridges between cultures, and today the students of NLUO are here to spread the message about the empowerment that education can bring. In order to spread awareness about right to education, today my teammates and I we are going to perform a skit where we educate the children about what the education and the empowerment that it can cause. ଘରେ ଦ୍ୱାରଟେ ଦିଶୁଛି ଯାଇକି ଆସିବା ସେଇଆ ଚଲ ସେଇଠି ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କା ପାଖରେ ପାଣି ନକ୍ 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 ସେମାନେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଘରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ କବାଟରେ ଭାଇନା ଟିକେ ପାଣି ମିଳିବ କି ପିଇବା ଆପଣ କିଏ ବାବୁ ଆମେ ହେଲୁ ଦୁଇଟି ସମାଜ ସେବକ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ପୁରୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆମେ ପାଣି ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବେ ଗରମ ବହୁତ ହଉଥିଲା ତ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସିବାକୁ ଟିକେ ମିଳିବ ତ ଚାଲ ଘରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିବା କେତେ ବଢିଆ ପିଲାଟା ନାହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାଟା ରାଣୀ ଯୋଉ ବାସନ ମାଜୁଥିଲା ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦିଟା ନେଇ ଆସିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ 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 ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନ ଘରେ ବସିକି ବାସନ ମାଜୁଛ ସ୍କୁଲ କାହିଁ ଯିବି ଯେ ଏତିକି କହି ରାଣୀର ବାପା ଆସିଲେ नमस्कार सर नमस्कार मोर छोट घर को आपन स्वागत आज दीपर खाइबा मो घरे खाई के जिबे नहीं बाबू आपण आ से असुविधा नियंतुनी आपण टिके हमको कहबे कि आपण को पिला माने कोन करंती सब गाँव जो पिला ने जो काम करन से करंती मो पुओ मो काम रे सहायता करे खेती बाड़ी रे सहायता करे हल चलाए से गछ रे बहुत भल जानी छि तार बहुत भल हाथ गछ चिनी शिखी छि आ मोर झियो सी मो स्त्री को सहायता करे घर काम रे आइ टे कहलो हम झियो केते बढ़िया माछ बेसर बनाए नमस्ते बाबू। नमस्कार हमारी बेटी बहुत बढ़िया रसोई बनाती है, आप आइए और खाइए। हेले भाउज पिला दु जन को केते बयस हबो ये 9 बरस की है और ये 13 बरस का है। अच्छा भाउज एते छोट छोट पिला स्कूल कहीं जाऊ नांती घरे बसी की रोसे करूचंती आ चाष करबा पे जाउचंती आपण हम घर को आसिक एमती कथबार्ता करछंती आमे जानते हम छुआ पे कौन भल कौन खराब ए आमे चासी लोक 2 घंटा खाइले बंचीबू से काम करले पैसा आसीबो घर को ए कष्ट मजे स्कूल फुल कथा किए बुझे भाई ना हमें आपन को कथा बुझुचु हेले आपण माने भी हम कथा बुझंतु स्कूल होची सबु पिलार एक मौलिक अधिकार शिक्षा शिक्षा और स्कूल रो महत्व अति अधिक रही सबु पिलांकर जीवन रे प्रत्येक पिला फ्री रे गवर्नमेंट स्कूल रो पाठ पढ़ी परिबो एवं एही पाठ पढ़िबा हिसाब रे से माने बड़ मनीष मध्य हे परिबे ता छड़ा न्याय हिसाब रे मध्य पिला मानकर मौलिक अधिकार अछि शिक्षा प्राप्त करबा को से माने 14 वर्ष हेला जाय बाबू आपण 2 जना स्कूल स्कूल तो कहउछंती पर अपने गांव रे दूर दूर तो स्कूल तो नहीं कोन स्कूल नहीं ना स्कूल नहीं एतिकी रे सीन 1 सॉरीला आपण बुझी पारले तो एबे जाई कोन होला ती दीटा पिला को गांव रे स्कूल ही नहीं से माने पाठ कोठी पढिबा आपण को परी एतिकी कहि तांको मां बापा निष्पत्ति नेले जे जाई कि गांव रो सरपंच से तो कथा हेबे और तांको निवेदन करिवे जे गोटे स्कूल निर्माण हो एटा होची सीन 2 जोटी मां बापा जाईचंती गांव सरपंच सहित कथा बाबा अच्छा तो आपण एबे जान दो आमे बुझ विचार करी निर्णय नबु कि कौन करी हबो तापरे आमे आपन को कहबो एबे आपण जाई परन सुनु तो कालिया पिला गाँव रो गधिया एबे चाष काम छाड़ी स्कूल रे पाठ पढ़िबो
अरे ये समाज सेवी कथा शुणी एमाने भी तांको स्वर रे गीत गाइबा स्टार्ट करलेनी बुझिलु हेले एबे आम उपरे गोटे विद्यालय बने गया पिला मानन को पठेबार अतिरिक्त भार हे गलन रे कौन करबा। अरे भाई तमे कथाटा भूल बुझुछ तमे याकू पैसा रोजगार करिवार गोटे सुजोग भलिया भाबो गवर्नमेंट से माने जो पैसा पाइबे से सरकारी पैसा रु 20% रे स्कूल निर्माण करी 80% आमे हम पॉकेट रे मार दबा आमे कोन पैसा एम्ति बुले बारे को कार्टर्ड अकाउंटेंट टू कम की बालिया भाई प्राथमिकता सीता चार्टेड अकाउंटेंट हुआ। बालिया भाई तामे निश्चिंत रुआ तामे खाली सरकार से पैसा ले लो ता 3 भाई मिसी मजा करीबा गांव वाला को बोका बनाइबा कोई बड़ी बात नहीं है। अबे तमे तो बहुत ठीक कथा कहछो ए जिनस मो मुंड को काई आसलानी गाँ लोक तो बहुत मूर्ख एमान बोका बनवा कष्ट हम मु सरकार तो योजना कर पैसा आनुची तापर आमे 3 भाई मिसी खाइबा चलो एतिकी कही से माने सरकार तो पैसा आनी स्कूल निर्माण करतेले हेले स्कूलटा सिना निर्माण हे गला सेटा केवल खाली गोटे एम्ति बिल्डिंग टे थिला सेतिरे किछि सुजोग सुविधा नथिला एबे देखंतु स्कूल निर्माण हबार किछि दिन परे फेर से समाज सेवी दी जण कोन करते दास मैडम को ऑफिस को गले दास मैडम गोटे बड़ बढ़िया ऑफिसर सी आपन गोटे पिल्ला को पई काम करंती सी गोटे बड़ चिठाटे नै गले विभिन्न प्रकार कंप्लेंट थिला आ दास मैडम तांको तांको ऑफिस को डाकिले। नमस्कार दास मैडम आपण को पाखरे 2 मिनिट समय मिलिबो कि हम पई। हां हां नमस्कार कोन तू कोन हैला आमे होचो दुई समाज सेवी विकास और रत्ता आमे इठी पर्यटक भाबे गाँ को बुली आछिलु हेले एहार विद्यालयर अवस्था को देखी आमे व्यस्त हो जाइछु आपण पाख को आसीबा पई। आ कौन ही कहबू मैडम प्रथमे तो ये अंचल विद्यालय ही नथिला तापरे आमे आसिके एटी विद्यालय स्थापना करने को चेष्टा करिलु स्थापना तो हो गला विद्यालय किंतु सेटा केवल ना को विद्यालय गोटे भी लक्षण नहीं तार विद्यालय ना को विद्यालय आपण माने टिके विस्तार रे कहि परिबे कि छुआ मन को कोन कोन एम्ति असुविधा होची। सर मोरे गोटे प्रश्न थिला देखो पिला माने तमसे एम्ति हुए कि नाही मते कहि बता परे देख काली कपिल शर्मा केते बढ़िया जोकटा कहिछि सोरे हेले सर टिके कहि देन तू कौन अरे महांती सर को पछानो जा महांती सर को पछानो सी तू आज भी कुछ 4 दिन हेलानी स्कूल आसी ना हंती आउ पचारी को कहू को अरे 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 तू जा भाई तू आओ गलो आओ पछरे आओ पछरे सर मेरा भी एक डाउट है। हाँ कौन बोलो सर 70 बच्चे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा था एक बार फिर पढ़ा देते तो। अरे गोटे दिन रे गोटे शिक्षक पढ़ा जाए प्रथम श्रेणी नहीं कि अष्टम श्रेणी जाए पढ़ते एते काम कर पारिनी भाई तो जा आओ का पछरे आज एतिकी पिले आज एतिकी सरला तमे आज जाओ आज छुट्टी आज समस्त छुट्टी तू धरती फोन धरे मोर रील बना देख बना रील एडा इंस्टाग्राम रे अपलोड करियो मोर लाइक आसीबो भलो फॉलोअर अछंती मो पा पटनायक सर चलो बाय बाय। अच्छा एमिति असुविधा होची पिला मानु को हाँ दास मैडम आ कौन कहबो हेले सेतिकी असुविधा नाही एठिकार पानी पीबा पे किछि व्यवस्था मध्य नाही पानी पीबा पे पिला पोखरी पाखकु जाउछंती एवं पानी सेई पोखरी पानी को खाद्य रे मिला जाउछि एवं सेइथिरे खाइबा बना जाउछि ता छडा पुओ झियो समस्त गोटे शौचालय रही यही सब अवस्था रे पिला रोग होची पेट खराब होची से माने स्कूल छाड़िबा को मध्य बाध्य होचंदी एवं तांको मझिरे कली भी लागुची कि किए से शौचालय व्यवहार करबे। अच्छा खाली सेतिक नुह दास मैडम विद्यालय रे 70टा छात्र मानक केवल गोटे श्रेणी गृह अच्छी तेणु विभिन्न श्रेणीर पिला माने अलग अलग श्रेणी रे बसिकी पाठ पढ़ाती से ही जुगु टीचर माने ठीक से पाठ पढ़ाती और अधिकांश समय स्कूल को आसती भी नहीं। मु बुझुची चल पिला माने जाई कि देखिबा जे तांको शौचालय एवं खाइबार अवस्था कोन हेटी पिला माने बसी खाउचंती। खराब खाद्य खाई गोटे पिलार पेट खराब हो गला। अरे
वापस आ गए माँ मोर मासिक आरंभ हो गला और स्कूल रे गोटे शौचालय अच्छे और गोटे पुआ से व्यवहार करती मत भारी असुविधा हुए। आज से तुम स्कूल मत जाओ, घर पे ही रहो और मेरी मदद करो। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି କରି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। धन्यवाद दास मैडम। ଧନ୍ୟବାଦ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆମ ନାଟକକୁ ଶେଷ କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଅନ୍ତରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ କଲେଜରୁ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କି ଆମେ ନାଟକରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ ତାହା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ହେଲେ ଏଇଠିକୁ ଆସି ଆମେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲୁ। ଆମେ କେବେ ଭାବି ପାରିନଥିଲୁ କି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଥିବ। ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ହସି ଖେଳି ମଜା କରି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଥିବେ ଏବଂ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ RTEରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟା ଏଠି ସବୁ ପାଳନ ହେଉଥିବ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ନାଟକକୁ ଅନ୍ତ କରିବୁ ଏଇଆ କହିକି କି ଶିକ୍ଷା ଆମର ଅଧିକାର। ସବୁ ମିଶିକି ଥରେ କହିବା, ଶିକ୍ଷା ଆମର ଅଧିକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। We performed a play about right to education, where we told the students about how privileged they are to have such good infrastructure and such good teachers. Unfortunately, this is not the situation of many students in India, and that is why we are here to spread more awareness regarding the same. Upon our interactions with the kids, we realized that the students are really happy with the infrastructure that they are provided. They have smart classrooms, they have good water facilities, they have separate washrooms for males, females and students with disabilities. However, some of the students are of the opinion that their campus can be more greener, there can be more trees, and additionally, some of the students also feel that there is a high chance for making the campus much more cleaner and much more beautiful. Our interactions today ranged with students who were in junior KG to students who were in 10th standard. Over the course of our interactions, we realized that the student-teacher ratio varies from 1:27 to 1:42, both of which are well within the ambit of the RTE. Additionally, we realized that all students study 6 subjects, and we also had the opportunity of asking them which their favorite subjects were. Additionally, when it comes to co-curricular activities, the students have an opportunity ranging from annual concerts in which they can showcase dance and music, and they also have sports events where the students mention that they are ardent players of football, cricket and such other sports. This morning we started with the hope that we
would see a lot of issues and difficulties with that the children would be facing in the schools. And we came up with that mindset that each one of us have, that government schools are of no use or they lack in a lot of sectors, let's say infrastructure or the teachers or the washrooms. But when we came here, like you would see in this video, things are just the opposite. It is one example of an ideal school where they have separate washrooms for girls and boys. They come to school early in the morning and finish it because it's a summer day and it would be difficult for the children to cope up. And all the classes run as they should be, and there are different teachers teaching different subjects. The ratio of the teacher and pupil is nice. So this is one example of an ideal school, and I can give assurance that the children enjoy their lives here and have good food and go back to home. We come to an end to the legal aid field visit that we conducted. We realized that education is not only a very powerful tool, but it also gives students the strength and agency to move forward and dream bigger. As we interacted with various students at the school we came to, we realized that these students have big dreams and aspirations, and we believe that with such good infrastructure and such good teaching facilities, those dreams will get wings and these students will eventually be able to spread the message of RTE even further.